Hello, this is Omar, son of Miss Orleen. I am working as a president, chief executive officer of multi-billion, multi-trillions of dollars Swiss franc funds. And as all of you know that my mother, Miss Orleen, Queen of Swiss bank account already linked with these companies and multi-billion, trillion dollar Swiss franc funds. And my father, America landlord, their account also linked. So our account linked, and so many people know me that I am King Robert, Prince William, Prince George, King Jason, King Jack, King Harry, Prince Harry. So all of these kinds of people know me taking these names. But having said that, I am not allowing anyone to work in multi-billion, multi-trillion dollar my firms like Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Mercedes, BMW, and all of these kinds of firms. And I am not giving a single amount of money to anyone from the account of these firms. And I did not allow anyone to sign any document of these multinational, multi-billion, international, multi-trillion dollar firms. So this is 100% sure statement from my side. As Umar Orleen, King Robert, Prince William, Prince Jason, Prince George, Prince Harry, Prince Jerry, King Jason, King John, King James, these are all my names, Omar. Normally people saying me Omar, but in Switzerland, America, and other countries, there are my other names. So I have the nationality of all of these kinds of countries, and I have a plan to come and stay in my hotels. So I just want to clarify this statement that I did not give anyone anything from these companies. There are chief executive officer who came to me with persistency, and persistently they are continuously coming to me in Saudi Arabia, and this is reported and address or vivid media coverage by the international media and social media. International media channels BBC, CNN, CNA, CNBC, London News, News 7, News 3, News 4, Channel 21, 22, 23, 24, and other channels. These are the media coverage, and scrum of cameras reported all of these kinds of pictures. Images depict all the narrative, evolving, shaping the frame of the picture. So that means that all of these CEOs coming to me, and they came to me and they had on-front communication and converse with me about some important work. I gave money. So, as all of you know, I am working and sometimes I am meeting. Having said this statement, there are some people who coming in the company, they are trying to build their own narrative and their own team. It's like a felony culprits team. So we are not accepting any felony culprits. We are not accepting any culprit, criminal, sex offender, sexual abuse who come in the company and had no value in front of the world. There is a one thing, specific thing, that a person had a value. What's your value? When you have value, then you are able to talk. There are president, prime minister, and other like Donald Trump, Vladimir Putin, Macron, and other Herzog. These president going to every person home, even the home of technician. So this is not a standard that these president are big one and they are going to a person home. They are going to people home who are working as a plumber, electrician, car cleaner, technician. These car cleaner, plumber sitting with them.
They are going to their home because they are getting money. So this is not a standard. The standard is the international bodies. What's your value? First of all, what's your value? So there are some suspect felony culprit who trying to build their own realm and kingdom by choosing and selecting those kinds of felony culprit who had no value, and the felony culprit involved in the big crimes, felony crimes. So we are not accepting these kinds of suspect offenders. We are not linking, we are not giving anything. If these suspects and culprits sitting in our company, they should remove. We vanish all of these kinds of scrum of felony culprits. So this is my statement. Whoever using my name, my sign, fake and illegal document, they are all going to prison, sentenced to prison. We will not accept. मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा नाम उमर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे किंग रॉबर्ट, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, प्रिंस जेरी, प्रिंस जॉर्ज, किंग जेसन, किंग जेम्स, ये सारे मेरे नाम हैं और मुझे नाम से पुकारा जाता है। बहुत सी मेरी कंपनीज हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पे मेरे नए ये नाम चलती हैं। तो मैंने आज तक किसी फिलोनी कल्प्रिट को, किसी भी ऐसे सस्पेक्ट को या किसी भी ऐसी शय को जिसकी कोई वैल्यू ना हो, मैंने कोई उसको काम कहने करने के लिए नहीं कहा। वो अपनी तरफ से कोई झूठ कर रहा हो या कंपनी में कुछ लोग एक नई कहानी और नई चालाकी दिखाने के लिए उसको आगे कर रहे हो, तो वो उनका मसला है, उन लोगों का ज़हनी मसला है। अगर वो समझता नहीं है तो फिर भी उसका ज़हनी मसला है। लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे किसी को नहीं कहा कि कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे, किंग रॉबर्ट का, प्रिंस विलियम का, उमर का, किंग जॉन, जेसन जेम्स का इस्तेमाल करे, जेकब्स का, जैक्सन का, विलियम, हैरी, जॉर्ज का नाम इस्तेमाल करे। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा नाम इस तरह इस्तेमाल किया जाए और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं। ये फेक और इलीगल डॉक्यूमेंट्स है जो लोग भी बना रहे हैं। ना इस डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू है, ना उस सस्पेक्ट और फिलोनी कल्प्रिट की कोई वैल्यू है जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को बना के और चालाकियाँ दिखा रहे हैं। सो ये हम ने बड़े अरसे से इस बात को नोट किया, इस पे रिपोर्ट्स बनी। कल मैंने CIA का एक पेज भी फेसबुक पे देखा जिसमें सेक्शंस दिए हुए थे और उन सेक्शंस को प्रॉपरली सेटल किया हुआ था बहुत से नैरेटिव के साथ कि ये सेक्शन वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सेक्शन ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह वो एक पूरी रिपोर्ट फॉर्म की गई है। देयर इज़ द रिपोर्ट of CIA department that there are some sections, and section means that these are the violations, that someone using my sign, this is violation, this is breached. So they are working on these kinds of narrative and these kinds of documents, intelligence agencies and other agencies, because these firms are multi-billion dollar and multi-trillion dollar firms. तो ये एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, मुसाद है, ये इस पे काम कर रही है। KGB है, रशिया की SVR है, रशिया की डेनमार्क की DSIS है, कनाडा की CSIS है। दीज आर ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज नेम, दे आर ऑल वर्किंग। और इसमें कुछ स्पेशल यूनिट्स भी हैं जिनके पास डाटा है, प्रेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस है, कुछ कोर्ट्स हैं, फेडरल जजेस हैं जिन्होंने इसको प्रोसिक्यूट किया, इंटरनेशनल कोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं जो इसको प्रोसिक्यूट कर चुके हैं, और प्रेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है उनके पास इसकी प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस में बहुत से जो प्रूफ थे और ऐसे मामलात थे, मैटर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व हुए, उसकी वजह से बहुत सी इसमें प्रोसीड हुआ है ऐसा काम जो कि बहुत सी बातें ओपन कर रहा है और बेनिकाब कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी इसमें। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन दिस प्रोसेस, तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ। तो हम लोगों ने कभी ऐसे इंसान को अलाउ नहीं किया, ना कभी इसको कहा है कि ये कोई डॉक्यूमेंट साइन करे, ना ही कभी किसी ऐसे को जिसकी कोई वक़्त या वैल्यू नहीं है, जिस तरह पाकिस्तानी या थर्ड नेशन है, उसको कभी कोई काम नहीं कहा। वो कभी भी कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो वो सब झूठ है, फ़रेब है, धोखा है। इस फिलोनी कल्प्रिट को सज़ा दी जाएगी, जैसे कि आपने देखा 2011-12 के कुछ कल्प्रिट थे, उनको 2022 में 23 में ज़बह कर दिया गया जब वो बाज नहीं आया। वो ऐसी CEO बन के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था। सो वी स्लॉटेड because we are not accepting. So this is Umar, King Robert, King James, Prince William, Prince Jason. We will slaughter if any felony culprit will do like this. So this is not acceptable, this is not justifiable, this is not verifiable. Thank you so much.